So we were discussing about this point. So you should, that's why I told you, you should understand the concept clearly. As per new education policy also, the government wants conceptual learning, not just rote memory, like just exam के लिए कुछ ऐसे रट्टा मार रहे. That is not needed. You should understand the concept. That is more important. So yesterday we were discussing about different types of function. The first one was one function, तो injective function. So उसका definition बोला one one, as the name indicates, one to one. That means एक के लिए एक husband एक के लिए एक ही wife, है ना, one to one. So definition ये बोल रही है कि what is the definition says is, for every x1 x2 belongs to the set, means domain, f of x1 is equal to f of x2, मीन्स दोनों का आउटपुट सेम है, उसका मतलब इनपुट्स आर सेम. दैट मीन्स आउटपुट सेम है तो इनपुट्स आर सेम. उसका मतलब क्या होगा, इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट ही होगा. मीन्स सो इन सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो डिफरेंट आउट इनपुट शुड हैव डिफरेंट आउटपुट्स. सो देन वी हैव सीन दिस. The first one is 1 1. Different inputs are having different output. The second one is not 1 1 because different inputs 1 and 2 they are having same output. These types of functions, the function which is not 1 1, it is known as many one, many to one, many to one. So either many 1 and 2, many elements to one element, so many one, इसको बोलते हैं many one function, not 1 1, then it is known as many one function. Next one also, this is also third example is also not 1 1 because 1 and 2 are having the same output. This is known as many one function. Last one again 1 1 function. Different inputs are having different output. All these are functions. So we are discussing about functions. उसमें से particular type of function के बारे में बात कर रहे हैं. That is 1 1 function. 1 1 function मतलब every input is having different outputs. So 1 1, yeah. Then सो वन वन है करके प्रूफ करने के लिए हमारा टेक्निक ऐसे है कि हाउ टू प्रूफ वन वन. जो व्हाट वी विल डू टू प्रूफ वन वन, व्हाट वी विल डू, we will assume output of x1 and output of x2 are same, but x1 and x2 are not same. That means two different, हम ऐसे assume करेंगे two different input के लिए output same है करके. But then we will prove this is possible only when x1 is equal to x2. तो हम ऐसे प्रूफ करेगा आउटपुट सेम होगा ओनली वन इनपुट सेम होगा. तो हम वन वन है करके, वन वन का डेफिनेशन ही वही है, डिफरेंट इनपुट्स आर हैविंग डिफरेंट आउटपुट्स. कभी फंक्शन वन वन एक करके प्रूफ करना पड़ेगा. उस प्रूफ करने का टेक्निक यही है कि हम ऐसे अस्यूम करेंगे कि डिफरेंट इनपुट्स x1 एंड x2 दे आर नॉट इक्वल. डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम, f of x1 एंड f of x2 दे आर सेम, ऐसे अस्यूम करेंगे. Then we will prove that this is possible only when x1 and x2 are equal. That means outputs are equal only when inputs are equal. That's a way to Equal. prove 1 1. Okay, that's a technique to prove 1 1. 1 1 का definition है ये. Now coming to, so 1 1 के लिए another नाम है injective. Injective बोलते हैं. So 1 1 नहीं है तो that function is known as many one. Now next function, function from x to y means domain to range whatever, it is known as onto function. onto function बोलना है तो if every element of y, that means आपका इधर एक this is your x, your function is from y. so आप कोडोमेन में इधर कोई भी एलिमेंट आपने चूज किया, से वन एग्जाम्पल y, कोई भी एलिमेंट आपने चूज किया, तो उसके लिए इधर एक प्री इमेज, इधर एक प्री इमेज x होना चाहिए इन सच ए वे दैट वो x का इमेज है सच में y.
ओके, तो ऑन टू का डेफिनेशन यही बोल रही है कि आप कोडोमेन से एक एलिमेंट लेना, कोई भी एनी एलिमेंट इन द कोडोमेन, एनी एलिमेंट इन द कोडोमेन शुड हैव ए प्री इमेज, उसके लिए एक प्री इमेज। हम इधर से बोलेंगे तो बोलते हैं था एक्स का इमेज है वाई, सो इधर हम बोलेंगे वाई का प्री इमेज है एक्स, सो वी शुड हैव ए प्री इमेज, और वी कैन से वाई, इट इज द वाई इज द इमेज ऑफ सम एक्स। सो इन सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो every every element y from the codomain should have a pre-image, एक प्री इमेज होना चाहिए। दैट्स द डेफिनेशन। एंड हियर देखो फर्स्ट फंक्शन ऑन टू है क्या, टेल मी, इज इट ऑन टू, इज इट ऑन टू? Every element has pre-image. Yes, sir. What about the pre-image of E? E and F कोई pre-image है क्या? No, sir. No, so it is not on to, because E and F are having no pre-image. E and F इधर का जो ओरिजिनल इनिशियल सेट डोमेन का कोई भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, और E एंड F के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, so it is not on to. What about this Onto. second one? Not onto. Not on to. Again, this E and F and this A, they are not having any pre-image, so this is also not on to. Then next one, third one, is it on to? Yes, sir. Yes, it is Yes, sir. on to. Yes, it is on to. Like A is having pre-image, actually दो pre-image है, कितना भी pre-image हो कोई इशू नहीं, हमें on to करके चेक करने के लिए every element should have a pre-image. B के लिए 3 है, C के लिए 4 है, so this is on to. What about the next? Yes, sir. That is On also to. Onto. on to. Okay, so that is one function and on to function. So एक चीज देखो, अब रिमार्क इधर देखो, सो ऑन टू होना चाहिए तो, ऑन टू होना चाहिए तो रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल होना चाहिए, isn't it? Range of that function, range and कोडोमेन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। If a relation is from one set to another set, first set is known as domain, second set is known as codomain, and उसमें से जो आउटपुट आएगा, जैसे फर्स्ट वन में सिर्फ ए बी सी डी, तो उतना एलिमेंट का कलेक्शन को बोलते हैं रेंज। सो रेंज विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, बट फंक्शन ऑन टू होना चाहिए है तो रेंज एंड कोडोमेन, देखो इधर ऑन टू, सो ऑन टू आ गया ए बी सी, पूरा ए बी सी पूरा सेट, domain, this is range and codomain are same. Here also A, B, C, D, all the elements are having pre-image. So range is also A, B, C, D, codomain also A, B, C, D. So on to NCD. होना चाहिए तो the main condition is the function का range and codomain दोनों equal होना चाहिए। Same होना चाहिए, इन द equal. फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं, फर्स्ट केस में रेंज तो आपको मिल रहे only A, B, C, D. So we know that range is always subset of codomain. So it is a subset of this set only, codomain. But you can, that is why. So, but EF, it's not there. So that is what, as a remark, we can say on to a function on to hona chahiye to range and codomain both should be equal. Okay. And then
नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन वन वन एंड ऑन टू, और इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव. सो as the name says, if the function is both one one and on to, it is known as Bijective. bijective function, either one one and on to function. So last example, this one is one one Bij and on to, one one and on to, or in other words you can say this is the example of a bijective function. So either फर्स्ट वन में वन वन था बट ऑन टू नहीं था, सेकेंड वन में वन वन नहीं था ऑन टू भी नहीं है, थर्ड वन में वन yes. वन नहीं था ऑन टू था, बट फोर्थ वन में एक देख सकते हो वन वन भी है ऑन टू भी है. सो इफ अ फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, that type of functions is known as one one and on to functions, or it is known as bijective function. Okay, and if a function is bijective, there is a relation between domain and range. Can you बोल सकते हैं? Can you say the domain and codomain? If a function is both one one and on to, there is one similarity, or say not similarity, there is one speciality for the domain and range, or domain, and this is your x is your domain, y is your codomain. So if the function is one one and on to, there is one special thing happening. Can you say what it is? Number of elements equal in codomain and domain set. Exactly. If function is one one and on to, the elements of domain and codomain both should be equal. Then only, मीन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में भी होना चाहिए, कोडोमेन में भी होना चाहिए, तभी एक फंक्शन बोथ वन वन एंड ऑन टू हो जाएगा. ऐसे एलिमेंट्स है तो सेम एलिमेंट्स है तो वन वन ऑन टू है करके नहीं, बट वन वन ऑन टू है तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होगा. क्लियर? So that's the idea of one one function, on to function, and one one and on to function. Okay, look at this. Show that so before going to that, if you want, you can just check the question number 2. Check the injectivity. Injectivity मतलब one one. Surjectivity मतलब on to, and bijectivity मतलब one one and on to. So आप देखो, since your natural numbers, so your function is from natural numbers to natural numbers, and the function is what? X square, means y is equal to x square. So इधर natural number आएगा 1 2 3 4 5 etc. इधर भी natural number आएगा 1 2 3 4 5 etc. अभी मुझे बताओ, is it 1 1? Yes, sir. Yes, it is 1 1 because like I say बोल One ka सकते, square one. yeah, every, like, or just say we can assume f of x1 is equal to f of x2. So आपने x1 x2 two different elements लिया, and x1 is not equal to x2. हमने assume कर रहे हैं कि f of x1 and f of x2 are equal. So f of x1 मतलब x1 का square, f of x2 मतलब x2 का square. So we know that x square of two numbers are same only when the numbers are same. Negative numbers आते हैं, but इधर negative number आएगा because it is from natural number to natural number. So x1 is equal to x2. So we can say that f is 1 1.
करेक्ट। तो हमने अस्यूम किया डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम है करके, बट हमने प्रूफ किया आउटपुट सेम ओनली व्हेन द इनपुट्स आर सेम, दैट मीन्स द फंक्शन इज 1 1, or we can use our common sense, like 1 will be mapped to 1, 2 will be mapped to 2, 3 will be mapped to 9. 9. So it will be go on like that. So every input every input should have one output. Output. So it is 1 1. अभी on to है क्या? No, sir. No, sir. हाँ, on to नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर ही एग्जाम्पल में, जैसे इधर 2 नहीं तो 3, दो numbers which are not perfect square, they are not having any pre-image, isn't it? Numbers which are not Not perfect. Perfect perfect square. squares, not perfect squares are not having any pre Input. इमेज। फॉर एग्जाम्पल 2 के Real. लिए कोई भी इमेज नहीं, दैट मीन्स कोई भी नंबर का स्क्वायर 2 नहीं आएगा नेचुरल नंबर का, कोई भी नेचुरल नंबर का Yeah. स्क्वायर 3 नहीं आएगा, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 5 नहीं आएगा, सो इट इज नॉट ऑन टू। ओके, क्लियर? Yes, sir. Okay, what about second one? Again, but इधर सेट चेंज हो गया, इजड टू इजड है। तो इजड मतलब आपको पता है पूरा इंटीजर है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एक्सेट्रा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एक्सेट्रा, and your function is same thing, f of x is equal to, or y is equal, f of x मतलब image of x under f, that is y is equal to x square. Is it 1 1? Yes, sir. 1 1 Yes, sir. कैसे 1 1 कैसे होगा? -3 का स्क्वायर 9 आएगा, 3 का भी स्क्वायर Yes, sir. 9 आएगा, सो -3 किधर जाएगा? -3 भी इधर 9 में जाएगा, 3 also will goes to 9, isn't it? Yes, sir. So it is not 1 1. On to है क्या? Sir. On Yes, to sir. ऑन टू मतलब कंसेप्ट क्या है, लाइक जो भी आप इधर एक प्री इमेज लेगा, इमेज लेगा, उसके लिए प्री इमेज होना Yeah. चाहिए। तो आपने ओके ऑन टू है करके बोलेंगे तो -3 का प्री इमेज क्या है बोलो? -3 का प्री इमेज देखो, फंक्शन क्या है देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर -3 आते हैं क्या? No, sir. नो, कोई भी नंबर का स्क्वायर जैसे 5 आते हैं क्या? No, sir. नो। सो उसका मतलब क्या होगा, इधर जो जो नेगेटिव नंबर्स है और 0 है, हाँ 0 के लिए है, 0 के लिए 0 है, नेगेटिव नंबर्स है अनपरफेक्ट, सो नेगेटिव integers and numbers which Which are are not not perfect square. perfect squares are not having Pre-image. images, so it is not on to। on to नहीं है क्योंकि -3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, Yes, sir. क्योंकि -3 के लिए प्री इमेज आना है तो इधर एक एलिमेंट होना चाहिए, उसका स्क्वायर -3 आना चाहिए, बट कोई भी नंबर का, कोई भी इंटीजर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir.
Okay. Now again, the third question, always the function is same in this situation. They are just changing the domain and codomain. Now they are telling the function is from real numbers to real numbers. Your function is same, y is equal to x square. So पूरा real number आएगा domain में, पूरा real number आएगा codomain में. अभी tell me, is it 1 1? Yes, sir. अरे 1 1 कैसे होगा? सेम सिचुएशन है जैसे -1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1. iota. 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1. तो इधर -1 1, 1 में जाएगा, 1 ऑल्सो किधर जाएगा? Yes. 1 में जाएगा, 1, है ना? और -2 4 में जाएगा, -2 है तो -2 will goes to 4, 4, 2 also will goes to 4. 2. So different inputs Yes, are not having same different output. They are having same outputs, isn't it? Yes, So sir. f of -2 and f of 2 are same, or f of -1 and f of 1 are same, or f of -5 and f of 5 are same. So it is not 1 1. डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट नहीं, बट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था 1 1 था, क्योंकि उधर नेगेटिव नंबर नहीं था. Did you understand the difference? yes, sir. Yeah. So now tell me whether it is on to. No, sir. So पहले एक प्रॉब्लम था नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. सो जैसे इधर आपको 3 मिला, सो 3 मिले तो अभी कोई इश्यू नहीं, इधर आपके लिए √3 है, √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 आएगा. जब नेचुरल नंबर और इंटीजर था, परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉब्लम आया था. जैसे 5 आए तो 5 के लिए कोई इमेज नहीं था, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर का, नहीं तो कोई भी इंटीजर का स्क्वायर 5 नहीं आते था. बट अभी ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, सो आपको इधर एक √5 मिलेगा, √5 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 5 आएगा. 5. 5. तो अभी ऑन टू है क्या? No, sir. वाई? No, sir. वाई? Negative Sir, number. हाँ, नेगेटिव नंबर्स आर देयर स्टिल. सो नेगेटिव नंबर्स, जैसे आपका इधर एक -3 है, -3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है. नेगेटिव नंबर्स आर नॉट हैविंग एनी प्री इमेज. Image. एक्चुअली जो परफेक्ट स्कोर नहीं था उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है तो 5 7 9 जो भी नंबर्स के लिए लेफ्ट साइड में पर नंबर्स है. बट negative numbers are still having problem. Negative numbers are not having any pre-image, so it is not onto. Okay. अभी देखो नेक्स्ट, देखो फोर्थ वन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. बताइए 1 1 है कि नेचुरल नंबर है तो आपका 1 2 3 ऐसे आएगा, इधर भी 1 2 3 ऐसे आएगा. तो Yes, 1 sir. 1 है क्या? 1, hey. Hey. yes, sir. Yes, 1 1, because f of x1, suppose x1 x2, two natural numbers, x1 not equal to x2, different natural numbers है करके लिया, हमने assume किया okay possible है तो their output are same. So image of x1 under f is x1 cube is equal to image of x2. So cube of two numbers are same, that means numbers should be Equal. same. So Same. that Equal. means it is 1 1, क्योंकि 1 नहीं है तो हमें नॉर्मल पे थिंक करेंगे तो हमें पता है 1 will goes to 1, 2 will goes to 8, 3 will goes to 27, 4 will 2, goes to 64. 60. So every input is having a unique output 1 to 1. Every natural number has a cube, so it is 1 1. Now is it on to? No, sir. No, it is not on to, because they said numbers which are not perfect cubes, isn't it? Numbers उनका which are not perfect cubes are not having any pre-image, so it is not onto.
right? 2 3 they are not having, because कोई भी नंबर का क्यूब 2 नहीं आएगा नेचुरल नंबर का. लेफ्ट साइड में रियल नंबर है तो कोई इशू नहीं था, क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब एक्चुअली आपको 2 आएगा, बट वो तो रियल नंबर है. नेचुरल नंबर में ऐसे कोई भी नंबर नहीं आएगा उसका क्यूब 2 मिलेगा करके. ओके. Again last one, Yes, fifth sir. one. Again it is from integers to, so natural number to change करके integer कर दिया, integer to integer. f of x y is equal to x cube, function is x cube. So 1 1 है क्या? 1 1 है क्या? Different inputs are having different output है क्या? Different inputs are having different output है क्या? Yes, sir. One है. Yes, sir. या स्क्वायर का केस में नहीं था, इसलिए कि जैसे -2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर बोथ आर 4, बट इधर नेगेटिव का Yes, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं. -2 का क्यूब है तो इट विल बी -8, 2 का क्यूब है तो इट विल बी 8, so it is going to different numbers, isn't it? Yes, sir. So f of x1 is equal to f of x2, that means x1 cube is equal to x2 cube. टू इंटीजर का क्यूब सेम है तो इंटीजर भी सेम होना ही चाहिए, दूसरा कोई ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं. इंटीजर सेम नहीं है तो भी क्यूब सेम आया करके, बट स्क्वायर का केस में था इंटीजर सेम नहीं था, -2 एंड 2 दे आर नॉट सेम बट देयर स्क्वायर्स आर सेम. बट इधर ऐसे कोई इशू नहीं है, इंटीजर सेम नहीं है तो क्यूब सेम नहीं आएगा. सो इट इज एस इट इज 1 1. ओके 1 1. अभी ऑन टू है क्या? नहीं sir. No sir. No. अगेन द सेम प्रॉब्लम. क्या है? numbers which are not perfect, numbers Cube. yeah which are not perfect cubes are not having any pre-image, so it is not onto. Okay, clear? Yes, sir.